Please welcome Anupam Kher sir into our office. Welcome. I came to this city on the 3rd of June 1981 with 37 rupees. बकवास तेरे जैसा एक्टर नहीं देखा या तुम झूठ बोलते हो, कमीने हो, कुत्ते हो, वगैरह. गर्लफ्रेंड. है. Yeah. I can feel very unhappy by thinking Brad Pitt is better than me. Life is an attitude. आपके साथ ऐसा रिसेंटली क्या हुआ जब आपने रुका और कहा कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की जगह मेरी फोटो आ गई. चोरों की दाद देनी पड़ी चॉइस की. उनको एक तो बापू लगते थे ठीक और फिर अनुपम खेर ठीक लगे. He started writing something on his notebook. He says, "Your medication." I said, "What?" He said, "Yeah, you're manic depressive." Did you? गाली देने वाला था. ओम नमः शिवाय. किसी को क्या फर्क पड़ता है? Perfection is boring. अक्षय कुमार ज्वेलरी बेचते थे ट्रेन में. मिस्टर बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे हैं. मैडम जो है ये मैसेजेस का जवाब बहुत मुश्किल से देती है. और मैं देख रहा हूँ ब्लू टिक तो नहीं हुआ, ब्लू टिक नहीं हुआ. अब इन्होंने एक चीज़ और कर ली, इन्होंने ब्लू टिक हटा ही दिया है. When I was working in America, I had to leave it because Kiran was diagnosed with cancer. But when I came here, I got Kashmir Files, one of the most important films of my life. Whatever bad happens is taking you towards your destiny. हमारे यहाँ बहुत होता था कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये कॉमेडियन है, ये विलन. बताया मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में गया, पर मैंने अंग्रेजी सीरीज किए. वो बात अलग है, मैं उसके लिए सुबह 4 बजे उठता था ताकि मैं अपने अंग्रेजी बोलने की रिहर्सल कर सकूं. I think all of us needed to hear everything you said on a Monday afternoon. When I narrated this script to my friend Satish Kaushik, he said, "तू बड़ा अच्छा करेगा." मेरे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक आस्था चैनल का एक वही प्लान है, and then I will host it. Please welcome Anupam Kher sir into our office. Welcome. Lovely. Thank you. Sir, welcome to office. Everybody is very, very excited. So am I. Equally excited. Since Lovely. morning, no work has happened. Excellent. I love your office and I love the people in it. So, sir, we're very excited because we've told people that we're going to be talking to you about life, and they think the best person to learn about life is you. So, Okay. lots of questions have been curated by people from office that they've had, and they're also going to ask you questions towards the end. Okay. So, very excited to do this. I'll start with. You're looking good. Thank you. You always look good. I'm trying. I have a center parting today. So, sir, the first question I have is that, they say we live several lifetimes in one life. And you've had so many chapters throughout, so many different roles that you've played. So, where do you think you are in the book of life? Are you in the climax, you're in a transition, or is it still just the beginning? It's always the beginning. Okay. Because it's always a new learning. It's always a new page, new chapter. And if your page is new page, then you can always go ahead with it. Because I don't want to sort of ride on the lessons that I've learned. And then I'll stop learning the other lessons. So it's better to start from scratch. The baby steps, and baby steps have always a possibility of growing. But if you already burden yourself with knowledge, that knowledge can sort of sometimes be a little fake also. Because beyond a certain point, it sort of do that. But that's a theoretical way of answering it. But I've always treated life afresh. I think every morning I get up, I say, "Thank you, God, another morning." So much to learn. If you don't carry the burden of your past achievements or your past life in the sense that life that you have dealt with, then you are lighter and you can fly higher. So I'll say it's in the beginning. It's the beginning. And how do you arrive at this mindset, right? So in between the camera shots or when you're... By living life. I live life. Acting is part of my life. It is not my life. Correct. Yeah. Like you do something, there are so many other people, they do different things. So I think everybody has his own life.
Yeah. It depends on how you treat your life. We are running fast nowhere. I think I'm walking slowly somewhere. We are always feeling that we have to run faster, we have to do something, we have to do something. And then we don't enjoy the present. We don't enjoy, this conversation is equally important for me as it's important for you or for them, because I think I will learn so much from this space that you have created, from your questions. And if you are open to learning, then there is no end to knowledge. Yeah. And is that what keeps you reinventing as well? Life keeps me reinventing. I think life is so beautiful. We constantly are complaining about life. We constantly are unhappy about things. We are constantly feeling underachievers, especially in today's world. We are in a world of mobile phones, social medias. We are always made to feel that somebody else is doing better than us. So where will you draw your strength from? Yeah. From life, from itself. From the guy who opened the gate, he was suddenly happy to see me. Yeah. That innocent life or innocent smile you don't see on people who will pretend that, yeah, a Hindi film actor, I don't see much movies, but it's okay. And I see through people. So I was telling you about small town being there. In a small town, especially in mid-50s, early 60s, life used to be at a standstill. आप उठते थे सुबह, पहाड़ों का अपना एक stillness होती है. So the life in itself has a great inner beauty in small towns. So when you come from that place and you don't change yourself, you don't let yourself change, then there is only happiness. Yeah. Yeah. I quoted recently what you had told me in our last interview कि भीगा हुआ इंसान बारिश से नहीं डरता. And that's, I still remember how you told me that you were sleeping on the railway station and there was just 4 hours between the last train and the first train, and you could sleep, and you were you were on the verge of giving up, but then you spoke to your My grandfather, who said this, Yes. and that kind of changed your perspective. Yes. So what advice would you give, similarly, people who in different contexts are feeling ki I'm at rock bottom? You're never at rock bottom. You can go lower than that. Yeah, means you can go lower than that. Yeah. And when you decide that I am at the absolutely rock bottom, you have to look up. And if you look up, you see so many wonderful things. It's an attitude. Life is an attitude. You make it because of your attitude of towards life. You don't make it because of your hard work. Of course, hard work is part of it. But some people have made it, they're still unhappy. Some people have achieved so much, they're still unhappy. So it has nothing to do with what they have achieved. And you will see somebody who's on the street, he's happy or she's happy. So it's an attitude towards, there is no end to greed. There is no end to wanting things. I can feel very unhappy by thinking Brad Pitt is better than me. But there are so many millions of people who will be thinking, Anupam Kher, I wish I can be Anupam Kher. Correct. So I think, and always somebody, my grandfather used to say that happiness and sadness is in your hands. You can feel very sad by thinking how many people are better than you. And you can feel very sad by thinking how you can feel very happy by thinking how many people are worse than you. Yeah. And people worse than you will be much more in any situation than people better than you. Yeah. So I came to this city on the 3rd of June 1981 with 37 rupees. From that point of view, I have come to talk to you about my important film, Vijay 69. 542 films, 40 years, Padma Shri, Padma Bhushan. I'm not trying to sort of tell you what all achieved. That's why I said I'm on the first page. But we stop being thankful to life. And when you stop being thankful to life, you are bound to be unhappy. Yeah. A lot of people tell me, how do you do so many things? You write books and you are always there, you're in function, etc. Again, my grandfather used to say that busy man has time for everything. It's only a person who has a lot of time will say, I'm busy. But a busy man will always squeeze in somehow or the other, something or the other. It's all attitude, it's all your own life. Happiness is something you have to practice.
Yeah. I'll give you an example. Everybody else. From today, you decide that for 3 months you are going to be happy. Okay? Today is 21st of October 2024. So November, December, January. 21st of January 2025. In these 3 months, you have chosen and you have decided that you will be happy. कुछ भी हो जाए, आपका गुस्सा किसी के साथ हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपने डिसाइड किया आई एम हैप्पी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट अफेक्ट मी. ऑन द 21st of January 2025 आपको आदत हो जाएगी. Then you will lead your life very easily and happily. Despite the ups Whatever and may downs. happen. Yeah. आप मुझे कितना ही बुरा कह लो, पर मैंने क्योंकि प्रण लिया है, माँ की कसम खाई है कि मैं अपसेट नहीं होने वाली या होने वाला. बकवास, तेरे जैसा एक्टर नहीं देखा, या तुम झूठ बोलते हो, या तुम कुछ भी करते हो, या कमीने हो, कुत्ते हो, वगैरह. Nice. I'm happy. I'm happy. You have only few followers. I have so many followers. I'm happy. This is a practice like motor driving. Yeah. When you learn motor driving, you go to motor driving school. They teach you. ये आपने गियर डाला या जो भी है ये डाला, फिर आपने एक्सीलेटर पे पाँव डाला, फिर आप छोड़ा, तो यू गो लाइक दिस, ठक 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 ठक, है ना. फिर आप थोड़ा और गाड़ी चलाते हैं, then you start getting used to it, then you sort of do that. Then the next few days you practicing it. Yeah. Then you practicing it, then you start looking into the rear mirror and you then you start moving with the one hand only, because you're practicing it. And then one day you are a trained driver. Yeah. Life is like that only. You have to practice and practice happiness. Yeah. And so you've spoken very vocally about mental health, and you're almost an advocate, right? That you speak very openly and very passionately. Was there a moment in your life where you realized that कि इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है? And this is why Because I went through depression myself. Hi guys, I hope you're enjoying the podcast so far. Do let us know what you think down in the comments. We always read what you have to say. And on that note, I want to fill you in on something really exciting that we're building at Humans of Bombay. So you guys know, we've mastered the art of storytelling for the past 10 years. And you have trusted us to tell your story. So now it's time for us to empower you. So me, along with 5 other experts, have curated a course for just that, where you learn how to tell your story in different settings. So it's called How to Tell Your Story, and the course is live now. You can check it down below in the link or even on the pop-up here. And with that, let's get back to the podcast. इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है. And this is why Because I went through depression myself. I had no idea. I thought I was the most positive, optimistic person. So about in 2010, 2011, I became an insomniac. I couldn't sleep. I still find it difficult to sleep. And I went to all the sleep studios. I went to Chicago Sleep Studio. I went to a lot of places. And that was the time when I wrote my first book, which is about life coaching, which was called The Best Thing About You Is You. I've read it. Yes. The small black book. That small black book. And that had become a #1 bestseller. और मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैंने किताब अंग्रेजी में लिखी थी, because it was based on my own experiences. And suddenly it became, and I recorded my book. I used to record, आज मेरा ये thought है, this is what I'm wanting to say, and then I used to transcribe that. And this is at that time, I was not able to sleep with a book on optimism, on life coaching under my arm. And then I went to, because I used to not sleep, then these lights will sort of bother me in the daytime in the shooting. So I went to my eye doctor, Dr. Ryan D'Souza, and I said, Ryan, give me some ointment so that I will feel better, because I don't sleep. So in the daytime, my eyes are dry and I need. He kept listening to me. He's a very polite, nice, positive young man. He said, sorry, Mr. Kher, you don't need an eye doctor, you need a psychiatrist. I said, what? He said, I know a Dr. Savant, and he's a very young, dynamic psychiatrist. Why don't you meet him? I said, are you crazy? I am the most positive, optimistic person. Yeah. I don't need a psychiatrist. I solve people's problems. I just wrote a book. I just wrote a book. He said, you can quietly go and meet him
I can call him to my office or I can call him to your house if you don't want to meet. I said, no, I'll openly go. What is there to... Because I was this confident guy that I have no issues. Yeah. So I went next day to Dr. Vishal Sawant's clinic. So his clinic was like this was the lobby, like we are sitting here. And there were 5-6 different doors. एक के ऊपर ENT लिखा था, एक के ऊपर eye doctor लिखा था, एक के उधर कुछ और doctor, एक के लिखा था psychiatrist. So because I was not visibly unwell, so everybody was looking at me and taking selfies and they were asking me, where have you come? So I used to say, cuckoo doctor. So I said, oh, cuckoo doctor. I was making fun. Then I was called in and there was this Dr. Sawant sitting there and I said, doctor, tell me your problems. So he told me that he actually started telling me his problem, that his wife is an anesthetist and she has a problem with the boss or something like that. So I solved that problem. I said, do this. I think you need to talk to your wife about this. And then, okay, solve. Next problem. So then for 1 hour we kept talking and I solved all his problems of life. And I very confidently got up and they said, this is my number. This is the book on life coaching, #1 bestseller. Need it, take it, and I will come and solve your problem. As I was turning, he started writing something on his notebook. I said, what are you writing? He says, your medication. I said, what? He said, yeah, you're manic depressive. I said, why? How? He says, because you postpone things. You push things. You don't want to go through the hardships of life. You don't want to face the facts of life. Your optimism is your problem. Because you say that, abhi nahi theek ho raha, aage theek ho jayega. Chalo abhi theek kar lenge. So that has all got accumulated. So then he gave me a medication which I tried for 3 months, but it used to make me feel groggy. But that is how I started talking about mental problem. I started talking about it and I became open about it because I experienced it myself. And one thing which he said, which I think is the most amazing thing, which everybody it applies to, whether you are a mental patient or not. He said, so I said, so what do I do? He said, don't make stories. We in our own mind make stories. कि इसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मुझे बुरा लगा, फिर इसने ऐसा सोचा होगा मेरे बारे में, फिर मैंने ऐसा सोचा, या फिर ये बेचारा कितना गरीब है और कितना उदास है. These are the stories I am making. That is not necessarily the truth of the other person. Yeah. So every time I start tearing up or I start feeling upset about something, I loudly say, don't make stories. So that's how, because we are not born complicated. We become complicated. Yeah. I think everybody, God, if whosoever that God is, he, she, I'm sure they don't make badly manufactured people. Yeah. They send everybody as innocent. And then as we live life, we have our own complexes, problems, inferiority issues, all kinds of. And in today's time, it's too much. Yeah. Because there is no human touch. Yeah. Everything is translated into emojis. Hug is an emoji. How are you? Smiley. Why didn't you come back to my house or something? Angry. There are no actual emotions we are feeling. Everything has become an emoji. There is no actual hug happening. There is no actual communication happening. There is no actual smiles exchange, and nobody is listening. We are constantly talking at people rather than talking to people. Yeah. So your strength is who you are, and also if you accept who you are, then life is very easy. I accept these are my shortcomings. Yes, I say it loudly. These are my plus points. I know it. My grandfather was once eating something very interesting. My grandfather was once eating. I think maybe 13, 14 years old, and while eating he was making this sound. खाते खाते आवाज़ करते हैं ना. तो my mother said, बाबूजी क्या कर रहे हो आप खाते समय, कितनी आवाज़ कर रहे हो? तो my grandfather said, बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा है, तेरी प्रॉब्लम है. I am enjoying myself. You are constantly made to feel inferior around. आप 5-star होटल में कहीं चले जाओ, आपको महसूस कराया जाता है कि आप एक 5-star होटल में आए हो. एक उसका 5-star होटल में हमेशा जो दरबान होगा वो आपसे लंबा होगा. अब वो हालांकि नमस्ते वो ऐसे कर रहा है और आप उसको ऐसे नमस्ते कर रहे हो. AC चल रहा होता है,
हश्ड टोन में लोग बातें कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है आई बेटर नॉट मिसबिहेव, I should be having manners, which is important in society. But they are making you feel, आप अपने पैसे खर्च करने लेके जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, 2 बच्चों को, बीवी को, आप चाय पीने जा रहे हो कि आओ मैं तुमको ले जाऊं. Suddenly you become a victim of the culture that they have created for you. इधर आपके यहाँ कॉफ़ी शॉप कहाँ है? Okay, go straight. Nobody will talk in Hindi. ये कहाँ है कॉफ़ी शॉप? Go straight, turn left on the left hand side. You will go turn left. अंदर खाली पड़ा होगा, बाहर लिखा होगा please wait for to be seated. So somebody will come, yes please, how many of you? अरे तुमको नज़र आ रहा है हम 4 लोग हैं. So you suddenly start doing, how many of 1, 2, 3, 4. Now your whole life is depending on how to impress this lady or this gentleman. You are spending your money. Yeah. You are come here all the way. You are there to give your good time to your family, but you have become the victim of this. Yeah. And then sit down. What would you like to have? Some water, sparkling, chilled water, room temperature, boiled. अब आप वो जवाब नहीं दे रहे जो आपको देना चाहिए कि हमको कोई भी सादा पानी चलेगा. You are thinking, what will I say that will impress this person? Sparkling. Okay, and what would you like to have? Tea. Okay, green tea, banana tea, this tea, hot tea, iced tea. What do you like? Chamomile tea. Basically, you have come here to have masala tea. You will say green tea without sugar. मैं क्या करता हूँ? I have to have the luxury of being who I am, but मैं सीधा पूछता हूँ कौन से गांव के हो? क्योंकि जहाँ से वो आया वो किसी गांव से ही आया है. उसको भी बेचारे को सिखाया गया है कि आपको ऐसे बात करनी है. So you are losing your individuality. We are all individuals. We are all amazing people. That's why उसका प्रूफ ये है कि आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से नहीं मिलता है. तो अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप स्पेशल हैं. हम ऑर्डिनरी अपने आप को बनाते हैं by living a life based on what others want us to do. Yeah. And by trying to be or subscribe to how other people want you to be. Yeah, we are constantly trying to make other people happy. And we have left our happiness in somebody else's hand. Yeah. And they will make sure that we will be unhappy. So, And this whole greed, this whole need to be popular with the whole world is a trap. First you be popular with yourself. Are you popular with yourself? First you have to describe yourself. कि मैं popular हूँ अपने साथ? नहीं, मैं तो नहीं हूँ. मैं तो उसके साथ popular होना चाहती हूँ या इसके साथ popular होना चाहता हूँ. कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है ये more important है. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ वो important नहीं है. I want to be popular with myself. And दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट है जिसको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं. ये जो ट्रैप है ना कि हमको मुझे सब पसंद करें, ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था. पॉसिबल ही नहीं है. it's impossible. कुछ ही लोग होते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन भी मुश्किल से अगर हो जाए तो अच्छी बात, या आपके कुछ दोस्त. बाकी लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, ऐसा मुझे लगता है. So sir, जैसे आपने कहा कि you wake up in the morning and say thank you. ऐसा आप और कुछ करते हो to intentionally make happiness a part of your life that people can I learn make from? other people's happy. Okay. The moment you decide to make other people happy, you will be happy. My father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. And it takes nothing to make somebody happy. You just have to smile at somebody. You just have to say, how are you? कैसे हैं घर में? कौन है? क्या करते हैं? People are wanting to be nice to you. Yeah. And also, people who pretend don't like themselves. That's why they want to be somebody else. I like myself. I'm happy to be who I am. If you make somebody happy, you will automatically feel happy. Automatically. Yeah. ये सब बाकी जो meditation करते हैं, जो योगा करते हैं, that's very important for health and for so many other things. What makes you happy? If somebody said nicely hello to you. हम अपना मूड जो है ना, वो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल पिछले 34 साल से कॉन्शियसली नहीं किया. मूड
and bored. You will rarely see me using the word आज मूड नहीं है या मैं बोर्ड हो गया हूँ. पर हमने अपना पूरा जो मूड है in that sense वो सामने वाले पे रखा. हम घर से निकले और लिफ्ट ऑपरेटर ने आपको ठीक तरह से हेलो नहीं किया तो आपको इसने मुझे हेलो नहीं किया. गाड़ी वाले ने, ड्राइवर वाला अपने किसी प्रॉब्लम में है, उसको डांटना. We live sometimes by this false notion of self importance. कि मैं जो हूँ वो कुछ हूँ, तो क्या मुझे सब लोग वो समझते हैं जो मैं अपने बारे में समझता हूँ. किसी को गाली देने वाला था, ओम नमः शिवाय. किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपको क्यों फर्क पड़ता है? कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आर यू गुड विद योर पेरेंट्स. द पीपल हु आर द मोस्ट important people in your life are your parents, because they don't want anything from you except for your happiness, and we take them most for granted. I love my parents when my father was alive, and I'm thankful and lucky to have my mother with me. We are all very thankful for her. We see her reels. Yes. अभी वो शादी में गई हैं जम्मू में, किसी मेरे कज़न की बेटी की शादी है, बेटे की शादी. तो ये सब मेरी फ़ोटो क्यों खींचते हैं? जो भी गाड़ी से रुक के मुझे कहते हैं फ़ोटो खींचो. मैंने कहा मम्मी आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत फेमस हो, तू नहीं किया, बकवास मत कर. ये सब रुक के फ़ोटो खींचते हैं, मास्क के पीछे से भी पहचान लेते हैं. So I think it's so wonderful. It's an attitude towards life, my darling. It's an attitude towards your life. It's a beautiful, and I see life from a comic point of view. अभी आपके ये भाई साहब ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मेरी एंट्री है और आपको बोलना शुरू करना है. टू मी इट वॉज वेरी कॉमिकल, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एंटर किया और अगर इन्होंने लेट बोला. बट आपकी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा आपको, बट इनको लगता है कि हम एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन करें इस प्रोग्राम की. परफेक्शन इज बोरिंग. वी हैव टू हैव रॉ एंड रफ एजेस इन लाइफ. परफेक्शन, चांद तो चांद ही है ना, चाहे वो आधा हो, चाहे वो ईद का हो, चाहे पूरा हो. उसको कोई टेंशन नहीं है कि आज इस इलाके से लोग मुझे आधा देख रहे हैं इसलिए मैं चांद नहीं हूँ. वो चांद ही है. खूबसूरत जो है खूबसूरती है, हमने उसको बनाया है. ये परफेक्शन है. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू लूज योर सिविल सेंस, बट आई लुक एट लाइफ very funnily. I look at people in a very, there is always a serious situation, maybe funny possibility hai, comic possibilities hai. So when you look at life like that, then everything looks fantastic to you. Yeah, just find that little humor. There is humor in everything. Yeah. Sir, so you often quote Rumi, you quote phrases from The Power Is Now. But when I did my interview with you last time, आपने सबसे ज़्यादा you spoke about your granddad only when it comes to learnings or lessons. What is the most important lesson you think you have learned, and from whatever you may have read or whatever you may have collected, that you'd like to share? No, I think my grandfather, I was lucky to be growing up in a joint family, because when you are a child, nobody teaches you. In fact, children don't learn anything if you are made to teach them. बेटा, सच की हमेशा अंत में जीत होती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. If you are proving yourself, if you are behaving like that, then it will be a very good teaching for me, very good learning for me. My grandfather used to say, life is very simple, we complicate it. I think that's the best thing that he taught me. He also used to say, don't go through a problem twice, which at one stage you were doing. Don't मेरे स्टाफ के सामने ऐसे मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ. Don't go through a problem twice, once by thinking about it, once by going through it. We go through a same problem twice, na? Yeah. Some people go through it 5 times. 100,000 times. दो चीजें और बोलना बंद कर दीजिए. मुझे लगा या मैंने सोचा, दोनों ही गलत हो सकता है. अरे मुझे लगा तू आएगा नहीं यार, तू तो आ गया, क्यों लगा तुझे? या मैंने सोचा यार, मैंने आपको ये मैडम जो है ये जवाब, मैसेजेस का जवाब बहुत मुश्किल से देती हैं. इनको आज मैसेज करो तो ये कल जवाब देती हैं. Communication is a problem.
Communication is not a problem and she is interviewing you. She's one of the best in the job. She's one of the best in the job. But ठीक है, कल जवाब दे दूंगी, देखती हूँ. और मैं देख रहा हूँ ब्लू टिक तो नहीं हुआ, ब्लू टिक नहीं हुआ. अब इन्होंने एक चीज़ और कर ली, इन्होंने ब्लू टिक हटा ही दिया है. मुझे लगता है कि लोग जो आपके जीवन में आते हैं, कुछ लोग आपके जीवन से जुड़े रहने चाहिए. Somehow or the other, because she has quoted one of my interviews when she was going through some time, I really feel protected towards you. Yeah. I feel may God always keep you happy. तो बाकी कुछ नहीं है, हर एक का फर्क नहीं पड़ता है. मेरे फ़ोन में एक भी रेड निशान नहीं होगा. मुझे बीमारी है वापस इमीडिएटली जवाब देने की. All my mails must be read. I don't like. You can call it that it's an OCD, but there is no unread message, no not replied. Another बीमारी I have is of punctuality. I'm there on time. No. This is not all directed towards you. Only have one issue that you don't reply. Then ये रोज बोलती हैं, जब भी मिलती हैं, अब हम मिलने वाले हैं जल्दी. इस बात को 1.5 साल हो गया. Anyway. So जल्दी मिलेंगे. अगले साल मिलते हैं. So what advice would you give, on the life lessons that you've learned to anybody who's going through, say, a lot of stress and they're not able to find humor in the situation? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा in any situation. Why do you think that I'm happy? I would like, that doesn't mean that I don't get unhappy. That doesn't mean that I don't feel sad. I feel all the emotions. But I always think कि यार मैं 3 जून 1981 को इस सिटी में 37 रुपये लेकर आया था. 37 रुपीज़. उस मामले से आज तक तो मैं तो बहुत है मेरे पास. बट इफ़ यू थिंक कि मैंने लास्ट ईयर इतना पैसा कमाया था, इस बार इतना कमाया है, तो फिर आप दुख को लेकर चल रहे हो. तो आई थिंक द रेफरेंस पॉइंट ऑफ लाइफ शुड बी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. जैसे अभी मैं यहाँ आया, यार अभी ये पता नहीं क्या पूछेंगी, क्या जवाब दूंगा. मैंने आते ही अपना बोझ हल्का कर दिया बाय सेइंग मेरी फ़ोटो नहीं लगी है. क्योंकि मेरे जहन में आया कि यार मैं आया कम से कम दिखावे के लिए मेरी फ़ोटो लगा दूँ, है ना. तो आई थिंक आई एम ऑन द डॉट ऑल द टाइम. आई डू नॉट. सो इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग अनपॉपुलर विद व्हेन यू आर वेरी फ्रैंक विद पीपल, बट दैट डजंट मैटर ना. People who are your friends will always remain your friends, even with your negative points. Yeah. Because that's why the childhood friends remain best friends all your life. My 2 best friends are from the 6th standard. Yeah. They are always my friends. They will never think that मैंने उनसे बात नहीं की. हम 2 महीने 3 महीने बात नहीं करते हैं. बाकी तो need based friends होते हैं ना. वो भी अच्छी बात है. I'm a people's person. I like people. I like to I'm not a loner. I don't like to sit alone and things like that. I don't want to go into this nonsense and the philosophy of life. आपने मुझे बोला कि मैंने रूमी को उसको मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है. कुछ मेरे कोट्स बड़े मुझे अच्छे लगते हैं. जैसे मेरे दादाजी की बात है. एक ओशो की बड़ी अच्छी लाइन है, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट. कमाल की लाइन है. तो मैं ट्राई करता हूँ. और मुझे तीसरी बात जो मेरे फादर ने कही थी कि फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन. It is the best quote a father could give to his son with an example. कि failure is an event. क्या होगा, ये नहीं चला, सपोज ये नहीं चला, ये वाला मैग कायम नहीं चला, कोई बात नहीं, खड़े होकर बात कर लेंगे, नॉर्मल बात कर लेंगे. Because the content of the film of the conversation is much more important than anything else. Yeah. So, but I think that comes from experience. I was always like that. That's why I could make it. I was bald. This is a very dignified, sexy bald look. But when you lose hair, आधे इधर से जाते हैं, आधे इधर से जाते हैं, तो बड़े सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है. I came with that look and thinness to make it in cinema. Yeah. When hairstyle was much more important than anything. And I also believe that उस रास्ते पर चलने का क्या फ़ायदा जहाँ पर कोई खाई नहीं है, कांटे नहीं हैं,
उतार चढ़ाव नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है। स्मूथ रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है। Difficulties are I always believe also that things which have gone bad in your past always become the stories of future. अब आप देखिए, मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ, मैं 37 रुपये लेकर यहाँ आया था, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया था 27 दिन। तब जब हो रहा था तो मैं बहुत परेशान था, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई थी। आज वो स्टोरीज हैं, आज मेरा इंट्रोडक्शन आपने वैसे किया। सो देयर इज़ नथिंग, if you take it in the right sense, that can go wrong with you. Nothing. Tragedies are happening, tragedies will happen, you will feel sad, lots of things happen, but at the end of it, people should remember you by your attitude towards life. Yeah. So sir, in this context, do you believe in destiny, or do you think we're all navigators of the decisions that we make? No, destiny is important. My grandfather was a very well-known astrologer. Oh wow. So I believe in destiny, but you can't believe in destiny and not work. है ना? मैंने किसी भी चीज़ में डेस्टिनी, तो फिर हर चीज़, जो फेलियर लोग होते हैं, जो लोग जिनको कभी कभी नहीं होता, वो जो कहते हैं कि यार उसकी डेस्टिनी में था एक्टर बनना, हमारी डेस्टिनी में नहीं था, या उनकी डेस्टिनी में आपसे कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई कि अरे आप ऐसी हैं, आप डिफरेंट हैं, आपका इतना बड़ा अच्छा खूबसूरत ऑफिस है, वो अलग अलग प्रॉब्लम है। पर आप काम भी तो किया ना इसके लिए। देयर आर 40 people, 30 people sitting here and working, they're working ना। The easiest thing for anybody is to criticize you because it makes them feel better. When you are doing very well in anything, not in terms of success, as a person also, अब कभी कभी आपने नोट किया होगा कि कोई आपसे बिना वजह से खफा रहते हैं, नॉट बिकॉज यू हैव अचीव्ड, बट बिकॉज वो आप उनको आईना दिखाते हैं आपकी पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज समबडी हु इज कंफर्टेबल इन हु द पर्सन इज, नॉट हाउ यू लुक। That's why so many people who may not be good looking or the traditional way, but you like them. Yeah. That's because they are comfortable in who they are. I think it's hard work and honesty and optimism can change your destiny. Okay. Yeah. If you see people who have made it, they have made it from scratch with great difficulty. Anybody. चार्ली चैपलिन, हमारे यहाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ से शुरू हुए। अक्षय कुमार ये ज्वेलरी बेचते थे ट्रेन में, या कोई भी, मैं मिस्टर बच्चन, या उससे भी चढ़ो ना आप, मुझे ले लीजिए, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। आई वॉज रीडिंग द अदर डे अबाउट हैरिसन फोर्ड, ही वॉज ए कारपेंटर, बट देन your cousin or your sister who is a very good comedian, stand-up comedian, she's mother of 2 and 45 years में एज में काम शुरू करती हैं, and then today is one of the best comic actors in America. So destiny में होता तो आप बैठे रहते। मेरी तो destiny में मेरे दादाजी ने कहा था, भाई तू जब 28 साल का हो जाएगा तुझे तेरी किस्मत चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, मैं 28 साल का वेट कर रहा हूँ। 28 साल का हो गया, कुछ नहीं हुआ। आई वर्कड टूवर्ड्स ऑल दैट। डेस्टिनी में लिखा होता है दैट आपका ये होगा, और फिर आप उसके प्रति काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। When I was working in America for the New Amsterdam, I was signed for New Amsterdam is a series on Netflix also. It's an American language series, very successful. I was signed for 5 seasons, and then 2 seasons के बाद I had to leave it because Kiran was diagnosed with cancer. So, and also some issues with Kiran's thing. So I had to leave that. And a part of me was a little sad because I had to make a choice whether I want to be with Kiran or continue. But then, and I was very unhappy कि यार इतना अच्छा जा रहा था, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ थी. But when I came here, I got Kashmir Files. One of the most important films of my life. I got Unchai. I decided to direct a film. So whatever happens, whatever bad happens is taking you towards your destiny. Correct.
इफ आपकी डेस्टिनी में कुछ बनना है, ऐसा नहीं कि आप बस एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे पानी पीना है और मैं सोच रहा हूँ मेरी डेस्टिनी में है, ये पानी में पीऊँगा एक दिन। अब बैठा रहूँ मैं, नो, आई विल हैव टू गो डाउन, आई विल हैव टू पिक इट अप, आई विल हैव टू ओपन दिस। अब मेरी डेस्टिनी में है कि मैं इससे मुंह लगा के पानी पीने वाला हूँ। So I worked hard for it. Yeah. Yeah. Sir, and what are the roles of relationships in this journey called life? You know, जो love का context है. You just spoke about. You make me sound like यार today मेरे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक आस्था चैनल का एक वही plan है, and then I will host it. No, I'm very happy. I'm happy. No, I think you're making me reflect things because I don't have answers ready for your questions. Yeah. It's your questions which are making me think. I'm not a guru who knows the answers. My answers come from my life. Yeah. So the love is, the moment you say the word love, strangely, we only think about man and woman. Love is about parents, about brothers and sisters, friends, pets. Which love are you talking about? Every love is selfless, then it is love. If you love somebody selflessly, then it is love. But love के भी अलग अलग एंगल होते हैं. मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, हालांकि उनको वो बाद में मेरे से एग्री की वो लेडी, यस्टरडे किसी के घर पे कुछ डिनर था, तो वो कह रही थी, अनुपम, यू नो दिस रिलेशनशिप्स आर नॉट लास्टिंग लॉन्गर. I said, why did our parents' relationship last longer? Because first of all, the roles were decided, that the man will provide and the woman will run the house. So there was no expectations. But चलो आज की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता है. आज की दुनिया में दोनों parents have to earn because it's tough. Now दोनों parents have to earn, so it is bound to sort of create some kind of a clash. ऐसा नहीं था, my parents were married for 59 years. ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में क्लैशेस नहीं हुए थे या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी या मैंने उनको झगड़ते नहीं देखा है. मैंने झगड़ते देखा है, बट वो बॉन्डिंग नहीं कभी गई उनकी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गई. आजकल क्या होता है, एंड दिस इज आई एम सेइंग विद ऑल माई लव फॉर पीपल हु लिव टुगेदर और पीपल हु फॉल इन लव एंड देन दे डिसाइड वेदर द रिलेशनशिप इज वर्किंग और नॉट टू गेट मैरिड. आई फील देयर इज नो सेंस ऑफ वंडर लेफ्ट बाय द टाइम you spend 3-4 years together. You also get to know each other's minus points. Arranged marriage में क्या होता था? ना मैंने अरेंज मैरिज किया, ना इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने की होगी, सबने लव मैरिज की है. बट अरेंज मैरिज में क्या होता था, मेरे पिताजी मेरी माता जी को बिल्कुल नहीं जानते थे. पहले 4-5 साल तो लग गए उनको जानने में ही, है ना. फिर 4-5 साल लगे उसको उसकी अच्छी क्वालिटीज़ पहचानने में. फिर उन अच्छी क्वालिटीज़ को से मोहब्बत हो गई. When my father passed away in 2012 on 10th of February, my mother did not lose only her husband. She also lost her best friend, her partner, her habit. When you live for such a long time, it's a habit, na? Yeah. So love has a different. Love raises expectations. कि मैंने आपको आई लव यू कहा, मैंने मोहतरमा को आई लव यू कहा, उसने मुझे इमीडिएटली आई लव यू क्यों नहीं कहा. द मोमेंट यू से आई लव यू टू, सुनना चाहिए, आपका सुनने का दिल करता है, बिकॉज सेल्फ वैलिडेशन तभी होता है. फिर अब वो बेचारी काम कर रही है, हाय आई लव यू टू बाय. जल्दी में रख दिया फ़ोन, क्यों नहीं इसने ध्यान से फ़ोन उठाया और मेरे को बोला आई लव यू प्रॉपर्ली, फिर आप दोबारा फ़ोन करोगे. अरे आई सेड आई लव यू, या बट आई एम एट वर्क, आई लव यू टू बाय बाय. नहीं, प्यार से बोलो आई लव यू. नहीं, अब तुम बनावटी बोल रही हो. लव की बात हो रही है, अब इसमें इनसिक्योरिटी इंसान की है. इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग ओनली मैन इज सेइंग. और इसका अलग होता है, हाउ वी टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड. 3 दिन में एक बार फ़ोन करते हैं, हेलो, फादर का फ़ोन है यार, हाँ बोलो पापा, कैसे हो बेटा, पापा जल्दी काम पे हूँ मैं, हाँ काम, अच्छा बाद में फ़ोन करता हूँ, ओके चलो ठीक है, ओके आई विल कॉल यू लेटर डैड, ओके.
Bye. Girlfriend. Hey. Yeah. Yeah. Idiot is. क्या है भाई? तो लव का कोई अंत नहीं है भाई. आप लव में क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? That's why self-love is also important. I want to love myself. Because if you don't love yourself, you're not capable of loving anybody else. You need to first learn to love yourself. And love is selfless, but are we capable of a selfless love? Doubtful. Problematic. Because expectations. बच्चों का भी आप जब बच्चों से आप चाहते हो कि वो आपको बताया, हम बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स का फंक्शन, बच्चों का फंक्शन होता है, हर माँ बाप जो हैं मोबाइल लेके ऐसे ऐसे अपने बच्चे को जूम इन करके उसका वो बनाते हैं. then they grow up and they become completely different monsters, so it's a catch-22 situation. Yeah. But any love which is selfless and which gives you, देखिए लव चला जाता है, बाकी चीज़ें चली जाती हैं, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द रिस्पेक्ट फॉर द पार्टनर हैज़ टू बी देयर. धीरे धीरे फिर आपको उसको तकलीफ़ पहुंचाने में सोचते हैं क्या है लव है. नहीं, तकलीफ़ पहुंचाने में नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड. It's very because your own persona is stopping you from loving somebody else because you have problems with yourself. Yeah. Otherwise, how will we be able to fall in love with again and again with different people and say with the same intensity to the fourth person you fell in love with? If suppose you had a breakup with somebody, that doesn't mean that for the rest of your life you don't say I love you to the other person. Yeah. You say it and with complete believability. और जिस आदमी से या जिस मोहतरमा से आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, आप उससे उतनी बेइंतहा नफ़रत करते हैं, ये पॉसिबल कैसे है? और करते हैं, वरना डिवोर्स क्यों होगा? यू कांट स्टे विद इन द सेम रूम, यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. सो लव इज एन एक्सप्रेशन which should not be only considered between man and woman. The most beautiful self-love is between parents and for the parents for the children, not necessarily children for the parents. Parents 99% love their children selflessly, completely. They only कहते हैं, मेरी माँ सुबह रोज़ 8 बजे मुझे फ़ोन करती है. Sweet. सुबह रोज़ 8 बजे वो ये देखती है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, और 30 सेकंड के लिए करती है. क्या कर रहा है? अगर मैं उनको बोलता हूँ मैं चाय पी रहा हूँ, तो शी फील्स माई लाइफ इज नॉर्मल. तो मैं उठते ही रोज यही बोलता हूँ, इफ शी सीज दिस शो शी विल कैच माई दिस थिंग. तो मैं रोज क्या कर रहा है? अभी मैं उठ रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना है. चाय पी रहा हूँ मम्मा. अच्छा ठीक है रख. या मैं पूजा कर रहा हूँ. ये 2 सेंटेंस अगर वो सुनती है तो शी फील्स दैट आई एम फाइन. All is well. All is well. अगर मैं सोचता हूँ कि खांस क्यों रहा है या चुप रहता हूँ, चुप क्यों है? So I think mother's love for the children and even father's love for the children is beautiful. We can have a whole 10 days of conversation on love. Yeah. We'll do more parts. Yeah. So a different kind of love is also for the love for the work that you do, the passion that you have, which like you said, 500 plus films, and I just saw Vijay 69's trailer and it is fantastic. It feels so feel good. It feels like a hug, not the emoji one, the real hug. Yeah. And he just seems so lovable as a character. He wants to challenge himself to a triathlon at the age of 69. Yes. And the world tells him nahi ho paega. And that is his journey. So what drew you to this role? Did you see yourself a little bit? Completely. I saw myself. I was 68 when this film came to me. And it was about a man who was 69. It's releasing when I'm 69. People like to put you in slots. हमारे यहाँ खासकर
हमारे यहाँ 50 के ऊपर वाले को सबको अंकल जी बोलते हैं या आंटी जी बोलते हैं, है ना? और 40 के लोग भी आंटी जी ही बोलते हैं 50 साल वाले को, बिकॉज इट्स ईजी फॉर देम टू स्लॉट पीपल. ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी हैं, ये सर हैं, ये मैडम हैं. आई हैव ऑलवेज फॉट दिस. I am totally against in slotting people into categories. Even when I came into movies, हमारे यहाँ बहुत होता था कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये कॉमेडियन है, ये विलन है. तो I always wanted to break the myth of this slotting of characters. Now I am at this age where people are wanting to call me a thespian, legend, veteran. My fight is I'm none of them. I'm a newcomer. Because their idea is to write you off and sort of say, okay, now let's give him lifetime achievement award and he will walk into the sun. Retire kar do. I will not do that. I am not going to accept any lifetime achievement award for another 20 years. Who are they to decide what stage have I reached? Who is anybody to decide that I am now a veteran? Fine, I'm a veteran for 40 years, I've been working. No, I'm sorry, but I have understood acting now. So when Vijay 69 came to me, I said, wow, what an amazing film script. When Akshay Roy came with the script, it's about a man who wants to run a triathlon, who discovers that there is nothing special about him. Through an event, he discovers that 69 साल जिया है और उसकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो देख के कहे पलट कर. हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की कहानी है. अगर पेरेंट्स को बोला जाए कि अपनी पापा अपनी या खासकर फादर को कि पापा अपनी अचीवमेंट के बारे में लिखना, पिछले आपने 50 साल 55 साल 60 साल में क्या किया है, वो ये नहीं लिखेंगे मैंने अपने 2 बच्चों को बड़ा किया है. वो ये नहीं लिखेंगे मैंने अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया है. वो ये नहीं लिखेंगे कि मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है. वो लिखेंगे कि वो कहेंगे हाँ, तो यही इसकी कहानी है. When he discovers that the only thing of good about him that he is his society's best secretary and that he does dandiya very well and he does this, then he says, this is what my life is. And then he decides to become the oldest man to run triathlon. Yeah. But the society does not accept that. कि triathlon कैसे लड़ूंगा? Triathlon का मतलब है 1.5 किलोमीटर तैरना, 40 किलोमीटर साइकिल चलाना और 14 किलोमीटर दौड़ना, जो कि मुश्किल है. इवन बच्ची, उसकी बेटी खुद की, उनकी जो है मैरिड बेटी, वो भी कहती कैसे कर सकते हो आप 69 का? तो कहता क्या जीना छोड़ दूँ? फिर उसकी बहुत अच्छी लाइन है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जो सच है. और वो अप्लाई यंगस्टर्स को भी होता है. आजकल बहुत सारे लोग वो काम नहीं करते हैं. आई एम श्योर जो यहाँ पर इतने सारे लोग आपके बैठे हुए हैं, ये सब इनके पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप कुछ एक खास किस्म की नौकरी करते, कि कहाँ आप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में बैठे हुए हैं. बट आई नो दैट्स द वे पीपल लाइक mediocrity because at least it's a safe way of living. Vijay Matthews of Vijay 69 wants to prove something to the world. I, Anupam Kher, do not like to be called veteran because there is so many things to prove. There are so many things to achieve. Yeah. There are so many things to do. I do not want to get into this mold and then finally after a few years, one day that will happen. Maybe on a wheelchair I will be going and being taken. But I don't self-pity at all. God has given so much to us, so much to me. From where I started to where I've come, I have now discovered this is the power of acting. I want to make it difficult for myself, this role. Let me do that. I did not know how to swim. Yeah, she was telling me. I learned swimming last year. मुझे आता ही नहीं था तैरना. इस फिल्म के लिए मैंने स्विमिंग सीखी. बिकॉज मुझे लगा कि मैं वैसा रोल सच्चाई से क्यों निभाऊं जिसमें मेरा डुप्लीकेट तैरेगा. तभी तो रियल लाइफ चैलेंज विद रियल लाइफ चैलेंज होगा ना. सो आई लर्न स्विमिंग. आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट स्विमर नाउ, बट आई कैन स्विम फ्रॉम हियर टिल एट लीस्ट देयर. So it's a beautiful film to inspire people, to tell people don't give up, to don't make it life out of your cliches. There is nothing called cliche.
You can always experiment. मैंने बताया मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में गया, पर मैंने अंग्रेज़ी सीरीज़ किए। वो बात अलग है कि मैं उसके लिए सुबह 4 बजे उठता था ताकि मैं अपने अंग्रेज़ी बोलने की रिहर्सल कर सकूँ। मैंने 3 किताबें लिखी हैं, वो तीनों लाइफ कोचिंग के ऊपर हैं। लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, उनमें से कोई एक्टिंग के ऊपर किताब नहीं है। मैंने एक्टिंग स्कूल खोला है, बाकी कोई स्कूल नहीं खोला। मैं द ओनली कोई बिजनेस नहीं किया। I broke the myth of typecasting because I don't have a fear of failure. It is your fear of failure that makes you mediocre. कि यार फेल हो जाऊंगा, मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगा, या मैंने सोचा मैं फेल हो जाऊंगा. I don't think that's important. Yeah, not at all. Sir, and he seems like such a lovable character. Yeah. No, he's irritating. Yeah, but He's irritating. Yeah, but the point, you start loving his stubbornness. Yeah, कि मैं करूँगा. कि मुझे करना है. वो गाली वाली भी देता है और वो सोसाइटी से झगड़ता है, बिकॉज ही इज फाइटिंग अगेंस्ट अ नॉर्म. वो एक पद्धति के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है. और वो एंड में उस क्या होता है वो तो आप फिल्म में देखेंगे, तो आपको लगता है हाँ यार करने दो ना उसको, क्या फर्क पड़ता है. हाँ, मेरे फादर को मैंने जो भी वो चाहते थे मैंने करने दिया. ही वॉज नॉट एन एडवेंचरस पर्सन, बट वो बॉम्बे आते थे तो कहते थे मेरा 10 दिन में वापस जाना चाहते थे शिमला. मैं क्यों, आप वापस जाना, हमारे साथ रहो, हम आपके सुपुत्र हैं, हम यहाँ. कहता जिस जगह मुझे सड़क क्रॉस करने में 20 मिनट लग जाए मैं वहाँ क्यों रहूँ. उनका पॉइंट सही था कि यहाँ पर उनको ऐसे अच्छा. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, ही विल वॉक, ही विल ट्रैवल. बट उनकी अचीवमेंट ये थी, अगर कोई मुझे पूछे कि फादर की अचीवमेंट क्या, वो रोज़ 20-25 किलोमीटर पैदल ऑफिस जाया करते थे और वापस आया करते थे. So I think it's a story of anybody who wants to do anything. And there are so many examples now. There are so many beautiful examples when you say it's not only related to old people, younger people, blind, the Paralympics people who win the medals on there. With that Sheetal Devi, the one who won, who is a armless archer, her story is so inspiring. Yeah. वो पैर से मारती है, एंड शी इज नंबर 1 आर्चर टुडे इन द वर्ल्ड. तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर टू इंस्पायर यू. विजय की स्टोरी भी वही है. विजय 69 में विजय की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. बट आई वांट टू स्पेसिफाई कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन, लेट इट्स नॉट अ फिल्म अबाउट एन ओल्ड मैन्स जर्नी ऑफ इंस्पिरेशन. इट्स अ पर्सन्स जर्नी, हाउ ही और शी इंस्पायर्स हरसेल्फ. क्योंकि रीइन्वेंशन तो हर साल भी हो सकता है. हर चौथे साल रीइन्वेंशन होना है. अभी मैंने रिसेंटली ऐसा ही अपना लिंक्डइन पे अपना बायोडाटा डाला था. वो वायरल हुआ. मैंने कहा क्यों वायरल हुआ, तो पता लगा कि why will somebody who has 40 years of experience with 500 films put on biodata, but I just want to reinvent myself after every 3 years. Wow. It's very important. So what is on the reinvention cycle after 3 years? I have directed a film. I'm very excited about that. And we'll talk about it when I meet you next time. I have tried to make a film which will hopefully be talked about for its treatment of the way it's made. I've tried to be different, so that's my next reinvention. Wow. And looking forward. I've heard already a lot about it, but still looking forward. It's something very good. It's called Tanvi the Great. Yeah. Yes. So we'll open it up to audience questions. Hello, sir. Yes. Good afternoon. You were agreeing with me most. Still have a question? Sir, अच्छा लग रहा था. हाँ, अच्छा. So, sir, you've spoken openly about your vulnerabilities, about yourself, right? How does perspective change once you start accepting yourself more, right? In a place where you're trying to match up to people's expectation, trying to understand, or you're trying to fit into a certain caste, when you actually start accepting yourself more, how does life change? How differently do you look at yourself and your relationships? First of all, you have to think you are special. You have to give yourself that place. And then you try and become that person who is special. Just thinking about you being special is not sufficient. So what are the qualities? I always start this with, whenever I do this
classes or motivational lectures, I always ask them, if you have to describe yourself in one word, what will that word be? So let me ask you that question. If you have to describe yourself in one word, what will that word be? Passionate. Passionate. So then you are passionate about food, you're passionate about life, you're passionate about relationships, you're passionate about your work. So then, and then you have to think, after 5 years, what will that word be? So that improvement will keep, you have to keep upgrade yourself. Like computer, like your phone, you have to keep upgrading. Life has to be upgraded. Otherwise the bug will make it not malfunctional. Hello, sir. Right. Success means different things to different people. Sorry, so success means different. Success means different things to different people. And after everything that you have achieved, what does success, like how would you define success now for yourself? So, having achieved physical success of so many things, you can say that I have achieved so and so. I try and look for what is the definition of a successful person. Not as a professional, but as a person. I think I'm heading towards that, of not letting people bother me, affect me, of trying to be kind. My father used to say that the most important thing you should look for, like my cousin sister's daughter is getting married a few months back, she called me. She said, "Mama, किस किस्म के इंसान से मैं शादी करूं?" मैंने कहा, "Man who is kind. Just look for a kind man. That's all. बाकी सब मिल जाएगा. Kindness नहीं मिलेगी. Kindness." So I am looking at it now. Success is about not letting my surroundings bother me. Empowering people, empowering generation by my conversation and by practicing what I am preaching. That is success. By taking things in their stride, but by getting disappointed, but then again trying to do something different. Thank you. Hi, sir. Thank you so much. I think all of us needed to hear everything you said on a Monday afternoon. So one question. So the character that you're playing, Vijay, in the movie Vijay 69, like you said, the character wants to give a message to the world, right? Like you said, sapno ki koi expiry date nahi hoti. So what is your one takeaway from Vijay that you apply in your personal life? You know, it's a very good question. विजय का नाम अनुपम 69 भी हो सकता था. मैं आम जिंदगी में वैसे ही हूँ जैसा विजय है. मैं कभी except for that Vijay uses a certain language in real life. I don't use it that with everybody. I use it with my friends. But my takeaway from that is that it made me learn swimming. I never thought in my life. अब तो मुझे लगा था अब स्विमिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं. अब तो मैं जितने रोल है उसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं I could have easily asked somebody to do my duplicate, but I wanted to take I broke my shoulder for this film, and the loss of your partner, and then sometimes in life you do something for your partner is much more gratifying. That partner can be anybody. It can be wife, it can be father. All the films important films of my life, I have done for somebody or the other. My Saransh I did for my grandfather. Daddy and Dilwale Dulhaniya Le Jayenge I did in my mind for my father. He was still alive, but I dedicated it to him. I was thinking this morning, who will I dedicate in my mind? I've already shot for this film. So then I thought that when I narrated this script to my friend Satish Kaushik, he was very thrilled, and he said, "Tu bada acha karega yaar." I didn't know why he said that, "Tu bada acha karega." Was he referring to my capability as an actor, or was he referring to me, my zeal to want to do something else? So maybe in some way or the other, I will dedicate this film to his memory of me and my friend. Like Chunky Pandey is my friend in the film, who will keep doubting me. But Satish was one friend who used to get jealous of me because I will do better than him sometimes, and but still he will keep pushing me
एंड से यार तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा कमाल का एक्टर है, तू बड़ा इसको खींचेगा, कमाल है, जेलस भी कहता काश मेरे को ये रोल मिलता. So when a person is open about his emotions, then I think it's a beautiful feeling. Yeah. Beautiful. Who's next? नमस्कार सर. हाँ जी. मेरा नाम सुमित है और अब तक जो आपने विजय 69 का जो प्लॉट बताया है कहानी का, ऑब्वियसली ये बहुत मज़ेदार मुझे लग रहा है. बहुत मज़ेदार फिल्म. बहुत मज़ेदार है सर. 5 फिल्मों को 540 फिल्मों में से 5 फिल्मों की लिस्ट बनाऊं, उसमें ये एक फिल्म होगी. ओह ग्रेट. सो सर आप अब तक आपने 542 आई थिंक फिल्म आप कर चुके हैं और आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे कि आप स्टोरीज़ को चूज़ कर सकते हैं. तो मेरा सवाल ये है कि अभी आपके लिए कहानी ज़्यादा मायने रखती है या फिर एक नया किरदार? एक किरदार अगर कहानी अच्छी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. अभी इससे पहले जो आजकल मेरी फिल्म आ रही है, चल रही है, सिग्नेचर, वो बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है. मतलब सिग्नेचर के टोटल कंट्रास्ट में आएगी विजय 69. बट कोई भी कहानी स्क्रिप्ट, कोई भी कैरेक्टर स्क्रिप्ट से ऊपर नहीं जाता. मैं खुशकिस्मत था, एक तो ये फिल्म YRF ने बनाई, इसके डायरेक्टर अक्षय रॉय थे, राइटर डायरेक्टर, ये खुशकिस्मती. तीसरी खुशकिस्मती ये कि ये नेटफ्लिक्स पे आएगी. नेटफ्लिक्स का जो कवरेज है और जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बहुत बड़ा है. सो जब अच्छी चीज़ अच्छी जगह पे आती, जब ये फिल्म इतनी अच्छी है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता था, बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं होती. सो आई थिंक ये ऑल द पावर्स हैव कम टुगेदर, होपफुली, टचवुड. अभी 8 नवंबर को ये रिलीज़ होगी नेटफ्लिक्स पे. बट आई थिंक अच्छा होगा. आई लाइक टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स. इसके बाद भी जो मेरी फिल्में आ रही हैं, अब मैं रिलैक्सड हूँ एज एन एक्टर. अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं वो मैं किसी ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए करता था. ये मैं अब अपने आप को इम्प्रेस करने. इसी से जुड़ा एक सप्लीमेंट्री सवाल है सर कि अब तक आपने हज़ारों किरदार निभाए अलग अलग फिल्म में. कोई एक ऐसा किरदार जो आप सोच रहे हैं कि ये मैं निभाना चाहता हूँ? 20 साल बाद इसका सवाल का जवाब दूंगा. अभी बहुत काम करना पड़ेगा. It's too early to answer that question. Hi sir, my name is Mahesh. So first of all, we are all extremely grateful to you for bringing such laurels and immense pride to our country. So my question to you is, what motivated a young man with 37 rupees in his pocket to fight against the odds and make it big in the world of cinema, versus what pushes you even today to do what you do, given you have achieved literally everything in the world of art and movies? What motivated me was that I had no choice but to make it. Because जब मैं छोटा था, मुझे तब से ही पता होता था कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं खेल कूद में अच्छा नहीं था, मैं सिर्फ सपने देखता था. छोटे शहर में सपने देखने के लिए बहुत टाइम होता है. टाइम ही नहीं ख़त्म होता है, शाम ही नहीं ख़त्म होती. शाम आती है, फिर सुबह आ जाती है, फिर चलते रहते हैं इंसान. बट एज आई सेड टू यू अर्लियर दैट माई कॉम्पिटिशन इज़ विद माई सेल्फ. और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है. और मोटिवेशन है कि इस तरह के सवाल तभी होते हैं जब आपने इस तरह का काम किया होता है. जब कोई आपसे कहे यार आप कैसे कर लेते हो, तो इससे बड़ा और क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. तो लाइफ इज़ मोटिवेशनल. आई एम सो लकी. हज़ारों लोग इस शहर में आते हैं कुछ बनने के लिए, और उनमें से 0.0001% बनते हैं. मैं उनमें से एक हूँ. हाउ कैन आई टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड? आई एम थैंकफुल टू इट एंड आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट. Thank you so much, sir. Thank you. So one last. Hi, sir. Hi. Thank you. I think, as Suti said, I think all of us really needed this 1 hour of motivation. You know, हम सबके कुछ ना कुछ limiting beliefs होते हैं, and मेरे भी हमेशा से थे. And I think मैंने आपको बहुत सालों पहले बोलते हुए सुन लिया था about कुछ भी हो सकता है. तो अब जब भी मैं किसी लाइफ में ऐसे मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ भी हो सकता है, तो मतलब कुछ ना कुछ अमेजिंग हो जाएगा. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके साथ ऐसा रिसेंटली क्या हुआ जब आपने रुका और कहा कि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? 500 रुपए के नोट पर गांधी जी की जगह मेरी फोटो आ गई. इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है. और क्या हो सकता है? कौन है बापू की जगह? कौन है? अनुपम खेर.
It was unreal when I woke up in the morning. नहीं, in the night only. किसी ने कहा अनुपम खेर, बापू की जगह अनुपम खेर की फोटो। मुझे लगा ऐसे कोई बोल रहा है। But actually, इससे बड़ा कुछ भी हो सकता, क्या हो सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चोरों को और कोई फोटो नहीं मिली। बट चोरों की दाद देनी पड़ी चॉइस की। उनको एक तो बापू लगते थे ठीक, और फिर अनुपम खेर ठीक लगे। पकड़े गए वैसे आप वो। थैंक यू सर। यू से वन डायलॉग जो आपको बोलना है, एनी डायलॉग फ्रॉम 540 फिल्म्स इन ट्रू अनुपम खेर सर्स कैरेक्टर स्टाइल टू एंड दिस। सपनों की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। That's it. Okay. That's good. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. It was wonderful. I must say that you are a wonderful set of people. I was very impressed with your office. It has a beautiful, calm energy. If I was a Vastu or Feng Shui expert, I will say इसकी वास्तु और Feng Shui बहुत अच्छी है. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much. Thank it you. was so lovely and everybody was so excited. You made our day. So thank you. आ जाओ अभी फोटो खींचने. हाँ, चलो. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.